प्रति दिन हम लगभग 2 लाख औसतन टीके लगाते थे। अगस्त में अब तक हमने 52 लाख का औसत हासिल किया है टीके लगाने का, और क्योंकि अभी अगस्त में कुछ दिन शेष हैं तो ये औसत और अधिक बढ़ेगा। अगर ओवरऑल डोजेज देखी जाएं, जैसा मैंने आपको बताया, पहली और दूसरी डोज के आंकड़े हमने आपके साथ शेयर किए। हेल्थ केयर वर्कर्स में 99% लोगों को पहला टीका दिया जा चुका है। 83% लोग जो एलिजिबल थे दूसरे टीके के लिए, उनको दूसरा टीका दिया जा चुका है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 100% को पहला टीका और 79% को दोनों टीके। 18 बरस से ऊपर की जो देश की बालिग आबादी है, उसमें 50% लोगों को पहला टीका दिया जा चुका है और 15% लोगों को दोनों टीके दिए जा चुके हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी हम दूसरे सर्ज के भीतर हैं। We are still in the midst of the second surge of COVID-19 in our country. The second surge has not concluded. It is not over. Therefore, we have to maintain all necessary precautions, particularly in the light of our experience that after every festival we see a spike, and therefore the coming month of September and October are crucial for us because we would be celebrating a few festivals. So therefore festivals have to be celebrated with COVID appropriate behavior. Thank you. Thank you. As Shri Rajesh Bhushan ji has very clearly said, that the second wave is still on in India and in some states, and upsurge is being observed in a few districts. We have about 41 districts which have weekly test positivity rate of more than 10%. And we have 27 districts which have weekly test positivity rate between 5 and 10%. The upsurge is being, population density is causing the spread. So wherever COVID appropriate behavior is not being observed, there we are seeing an upsurge of cases. We know that these vaccines are disease modifying vaccines. They are not disease preventive vaccines, and therefore it is very important to continue to use the mask even after vaccination of 1 or 2 doses. That mask usage has to continue. That is very important. We know that vaccines reduce the disease severity, they reduce the possibility of hospitalization, and also avert death to the tune of nearly 98-99%. Mass gatherings, as has been emphasized, have to be discouraged, and full vaccination offers protection, again, as I want to emphasize, against severe disease and death, and should be a prerequisite if attending a gathering is critical. So if attending a gathering is critical, vaccination is a prerequisite. Thank you. I will just stop here. Thank you. We will take some questions now. 1515. Hello sir, I'm Sherin from Times Now. My question is to Mr. Rajesh Bhushan. We have in fact shown how there have been multiple certificates that has in fact we have got from Telangana government, and where physically the person has not got themselves inoculated, but even then we have seen the vaccination certificate being handed out to them on the price of about 2,500 to 3,000 rupees. What is the reaction of the Health Ministry on this on record? We have seen the media reports and we have very closely analyzed them. We have shared these media reports with the concerned state government. We have asked for their inquiry into this. However, I would like to reiterate that if we look at the configurement and alignment and engineering, IT-based engineering of CoWIN system, it remains foolproof. However, if there are instances where people have used other means to generate digital certificates, we will definitely take appropriate action. Thank you. Number 19.
सर मेरा सवाल ये है कि सर कहा गया था कि 216 करोड़ वैक्सीन डोजेज आएंगी अगस्त से दिसंबर के बीच, जिसे बाद में कम कर दिया गया 135। तो अभी क्या स्टेटस है? 6 वैक्सीन को इमरजेंसी ऑथराइजेशन है, सिर्फ 2 ही वैक्सीनेशन में मिल रही हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या राज्यों में वैक्सीन की कमी है? आप लोगों ने पाया होगा कि पिछले 2-3 सप्ताहों से इस प्रकार की कोई खबर किसी राज्य से नहीं आ रही है। हम प्रतिदिन रोज सुबह एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि राज्यों के पास कुल कितनी वैक्सीन बैलेंस्ड अनयूटिलाइज्ड पड़ी हुई है जिसको वो अगले दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले 3 सप्ताहों में बैलेंस अनयूटिलाइज्ड वैक्सीन डोजेस की संख्या कभी भी 2.5 करोड़ से कम देश में नहीं हुई है। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि वर्तमान जो स्थिति है वो संतोषप्रद है। हम बार बार राज्यों से और संघ शासित क्षेत्रों से ये अनुरोध करते हैं। पिछली बार भी हमने कल एक बैठक सभी राज्यों के साथ की थी जिसमें ये अनुरोध किया था कि वैक्सीनेशन की दर को और बढ़ाएं। उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में जैसा मैंने निवेदन किया 80 लाख डोजेज देश भर में लगाई गई। आज भी अभी 47 लाख से अधिक डोजेज हम एडमिनिस्टर कर चुके हैं। 24. Thank you, sir. Meher from NDTV. Please, could you give us an update on oxygen preparedness if there is a third wave? How much oxygen production has gone up and oxygen storage in states? We will give you a broad generic picture today, and granular details we would share with you in our next press conference. After the second surge, there has been a concerted effort to ensure that at the hospital level and within the states at regional levels, oxygen buffers are created. So how do we create oxygen buffer? We create oxygen buffer by ensuring that public health facilities, and I am underlining this word, public health facilities must have their own captive oxygen generation plants. And a large intervention in this has